इसमें डालना है वाटर। उसके बाद में डालना है सीजनिंग पाउडर। सूप के लिए कुछ हम प्लेटिंग कर लेते हैं इस तरीके से इसमें कुक कर देना है इस तरीके से डाल के निकल जाएगा ना, टेस्टी नहीं होगा ना? नहीं। इस तरीके से हमारा इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद इस थोड़ा सा इसमें हम प्लेट डाल देंगे इस तरीके से। हमारा प्लेट रेडी होता है और इसमें सूप डालेंगे। दिख रहा है, दिख रहा है बस ये आया ना सही। इस तरीके से हमारा सूप रेडी हो जाएगा। और चलिए अब हम इसको थोड़ा नंबर 1 है, बहुत अच्छा सूप बना है।